सो है देयर ये न्यूमेटिक प्रेस सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम न्यूमेटिक स्ट्रक्चर की बोल्टिंग असेंबली करना सीखेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट पार्ट 4 देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द माउंटिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। स्टार्ट विद द वर्टिकल प्लेट। तो यहाँ पे हम सिलेंडर माउंटिंग प्लेट और वर्टिकल प्लेट को 3 स्क्रूज से माउंट कर देंगे। इसके लिए हम सिलेंडर माउंटिंग प्लेट में क्लियरेंस होल बनाएंगे और वर्टिकल प्लेट में थ्रेडेड होल बनाएंगे और हम स्क्रूज से यहाँ पे दोनों प्लेट्स को आपस में टाइट कर देंगे एट द 3 पोजीशंस, समथिंग लाइक दिस। तो पहले यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेट में थ्रेडेड होल बना लेते हैं। सो जस्ट लेट्स ओपन दिस पार्ट, गो टू द स्केच एंड सेलेक्ट दिस टॉप फेस एंड नाउ गो टू द लाइन एंड सेलेक्ट द सेंटर लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस थिकनेस and click at once and click it in the middle somewhere and click it one more time and click it on the middle of this thickness। और यहाँ पे हम इस फेस से और इस फेस से सिमिलर डिस्टेंस पे होल बनाएंगे। So what we can do, just select the lines and make them equal and hit OK। और अगर यहाँ पे हम मिडल में होल बनाना चाहते हैं तो हमें इन लाइंस को भी इक्वल करना होगा। सो मेक देम इक्वल एंड नाउ वी हैव टू सेट द डायमेंशन फ्रॉम वन साइड। सो गो टू द स्मार्ट डायमेंशन एंड सेट इट टू 15 mm। इट्स ऑल अप टू यू बट ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड द बोल्ट पोजिशन अलोंग द लेंथ एंड बिकॉज ऑफ द स्केच रिलेशन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन सेट करना पड़ा एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्केच रिलेशन। नाउ जस्ट क्लोज द स्केच, गो टू द फीचर and go to the hole wizard and select the threaded hole and select the hole size M6x1। और अगर लोड हैवी हो लाइक 100 kg 500 kg तो फिर हमें M10 M12 या उससे भी ऊपर के बोल्ट साइज पे जाना चाहिए। and just pull this bar and select the end condition blind and set the hole depth of 20 mm and set the thread depth to 16 mm and it's all up to you, but 16 mm depth of thread is well enough। and go to the position, go to the 3D sketch and select the points and hit OK। now we have to mount the vertical plate from bottom side also। so what we can do, we can make the threaded hole on this face also। so select the face and normal it and go to the sketch, select the sketch, select this face and go to the point and select the point right here। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम ऊपर वाली होल पोजीशन को अगर चेंज करेंगे तो बॉटम वाला भी होल पोजीशन चेंज हो जाएगा। Now hit OK, close the sketch, go to the feature, go to the hole wizard, again go to the threaded hole and everything is set and selected। so go to the position and 3D sketch and just locate the points and hit OK। now we can hide the sketches and save it and go back to the assembly and now we have to make the clearance hole on it। so what we can do, we can just select the part, right click on it and select the edit part and go to the sketch, select the sketch and select the top face where we have to make the clearance hole। go to the vision and select hidden line visible and now go to the line and select the center line। now here just mark the position of threaded hole so that we can make the clearance hole on the selected position and now just close the sketch and go to the feature, go to the hole wizard and select hole, go to the clearance hole and select the size of M6
and change the in condition to through all and go to the position 3D sketch. Oops, but line are not visible, so there is a problem, and the problem is this I button is checked. So what we can do, just uncheck it and select the line and select the point, oops, and hit OK. And now just exit the editing, and now just change the visibility. So there we are. Now we can do the same at the bottom. So what we have to do, just edit the part and go to the sketch. And go to the feature and go to the hole wizard. And can we make the clearance hole also here? I will say no. We will have to make the counter bolt here. I will let you know why. Just for now, select the counter bolt and select the socket head cap screw. And the socket head cap screw is a machining bolt. And select the size of M6 and set it to through all, which is already selected. Go to the position 3D sketch and just mark the points and hit OK. Okay, so where we should use the counter bolt hole and where we should use the clearance hole. So for an example, यहाँ पे अगर हम clearance hole बनाते तो क्या problem आती? So go to the hole wizard again and change the counter bolt hole to the simple hole and select the clearance hole, and size was M6 and hit OK. Now just close the edit component and here go to the library and go to the toolbox and go to D-standard, bolt and socket, hexagonal socket head screw, and select the standard of hex head bolt and just try to assemble it right here. And the size is already selected, and select the length of the bolt as per the thread depth. So I'm selecting it 16 mm and hit OK and just repeat it. And now let's see it from the side view. तो यहाँ पे बोल्ट बेस प्लेट से बाहर है और अगर इसे हम कहीं पे रखेंगे तो ये सही से रेस्ट नहीं हो पाएगा. लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल. क्लियरेंस होल में एक सिंपल सा होल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम M6 की बोल्ट को यूज करें हैं तो क्लियरेंस होल की साइज 6.5 to 7 mm हो सकती है. और इस होल की साइज इसलिए इतना एक्स्ट्रा होता है क्योंकि अगर थ्रेडेड होल थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाए तब भी हम बोल्ट को टाइट कर पाएंगे. और होल का साइज हम इसलिए भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइट करते टाइम बोल्ट की थ्रेड सरफेस से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो थ्रेड खराब हो जाती है. एंड नाउ अगर हम काउंटर बोल्ट की बात करें तो काउंटर बोल्ट में होल 2 स्टेप्स में होते हैं. एक स्टेप तो क्लियरेंस होल जितना ही होता है और जो दूसरा स्टेप होता है उसकी डायमीटर इतनी होती है कि उसमें बोल्ट का हेड आ जाता है, समथिंग लाइक दिस. तो क्या हमें हर जगह काउंटर बोल्ट ही यूज करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है क्योंकि काउंटर बोल्ट में आप वॉशर नहीं लगा सकते हैं, बोल्ट की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते हैं और काउंटर बोल्ट करने में 2 होल्स करने होते हैं तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. बट अगर प्लेट के ऊपर एक और प्लेट माउंट करना हो तो हम इस प्लेट में काउंटर बोल्ट होल कर सकते हैं. बट अगर एस्थेटिक लुक की बात करें तो काउंटर होल बोल्ट की एस्थेटिक लुक अच्छा होता है. बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां हम चाह के भी काउंटर बोल्ट नहीं बना सकते हैं. लेट्स से कि ये कोई पार्ट है समथिंग लाइक दिस और इस प्लेट की हाइट मान लेते हैं कि 300 mm है. तो यहाँ पे हम काउंटर बोल्ट नहीं बना पाएंगे. क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ड्रिल हम ऊपर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ड्रिल 300 mm की नहीं आएगी. तो इसीलिए ड्रिल हमें नीचे से ही करना होगा और जब नीचे से करेंगे तो ऊपर काउंटर बोल्ट नहीं बना पाएंगे.
तो ऐसे कंडीशंस में हमें कभी भी काउंटर बोल्ट नहीं देना चाहिए। आई होप यू गेट द आइडिया। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको मशीन अच्छी दिखानी है तो आप काउंटर बोल्ट यूज कर सकते हैं, बट अगर आप स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्लियरेंस होल ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम वहाँ पे वाशर को भी यूज कर पाते हैं। पर अगर आप मशीन ऐसे बना रहे हैं जो सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन है, तो वहाँ हमेशा हमें क्लियरेंस होल ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे स्प्रिंग वाशर के साथ बोल्ट्स को लगा सकते हैं और वाइब्रेशन के कंडीशन में स्प्रिंग वाशर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ बैक टू द डिजाइन। ओके, सो नाउ वी हैव टू माउंट these ribs into the structures. So what we can do, just open the rib and go to the sketch and select the faces, something like this, and set the distance 15 mm, and for this side I'm also setting this to 15 mm. This is all up to you. And just close the sketch and again take the sketch and select this face and again sketch it, start from the middle point and something like this. And now here set the distance of 15, or you can set it to 10 mm, and here also we can set 10 mm. We will check it later. And close the sketch and go to the feature, go to the hole wizard and select the tapped hole and select the size of M6 and take the position and 3D sketch and make the holes right here. And now just go back to the type and go to the end condition and select it to blind and set the distance of 16 mm and the thread depth is 12 mm. And hit OK. Now just check कि ये कोई intersect तो नहीं हो रहा है. So go to the vision and change it to hidden line. तो यहाँ पे दोनों threads आपस में intersect हो रहा है. So what we can do? We can just move this hole upside. So select the sketch and select the dimension and change it to 20 mm and let's check it. And now this is fine. But here this threaded hole is going out, so what we can do, change the dimension from the top and make it 20 and hit OK. Now everything is fine. Just save it and we can hide the sketches and set the material to mild steel, which is already selected, and close it. And now we have to make the holes on this plate. So what we can do, just select the part and edit the part. But see, here is the multiple parts. So select only the parts where we have to work and right click and isolate it. So now let's see, the rest of the part has been hid. Now what we can do, just edit it, go to the sketch and sketch on it and change the view, and we can just mark the position of the hole. To marking the position of hole, I prefer to use the center line. You can use the point also, it's all up to you. I'm using the line because if it will be required, we can easily set the dimensions. And now just close it and close it and just open the part, just rotate it and go to the feature, go to the hole wizard and select the clearance hole, or you can use contour bolts, it's all up to you, and select the size of M6 and set it to through hole and just make the holes right here. Hit OK. Now just check it by make it hidden line and there is no problem. Just hide the sketch and go back to the assembly. Now change the view to shaded with edges. And now we have to mount this rib to the base plate. So just edit the part and just make it hidden line. Go to the sketch center line
and mark the hole positions, something like this. Close the sketch and just open it. Go to the feature, go to the hole wizard and select the contour bolt and select the socket head cap screw and size is M6 and just make the contour bolts right here, something like this. And now just change this clearance hole to the contour bolt hole. So select it and here select the contour bolt hole and change it to socket head cap screw. Size is already selected and in condition is already set. Now just save it and we can set the material of mild steel and we can just hide the sketches and just go back to the assembly. And now we have to mount this plate to the vertical plate. So just repeat the process. I am putting this on the fast forward mode. And now we have to mount this fixture with the base plate. So where we should do the threaded hole and where we should do the tapping hole. तो threaded hole हमें कभी भी नायलॉन के पार्ट्स में नहीं बनाना चाहिए, हमें हमेशा मेटल के पार्ट्स में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नायलॉन के पार्ट्स में थ्रेडेड होल बनाते हैं और थोड़ा सा भी ज़्यादा टॉर्क से टाइट करेंगे तो थ्रेडेड होल मिस कर जाएगा. So what we can do, threaded hole in the base plate and simple hole in the fixture. So just open the fixture and take it to top view, and here you can use 2 bolt or 4 bolt, it's all up to you, but just for simplicity I'm going to use 2 bolts right here. So just go to the sketch, select the sketch, select the face and make the hole right here, but it will better to make the hole vertically. So because there is a space, again make one more line, center line, and select those 2 lines and make them equal. Hit OK. Go to the smart dimension and select the gap of 65 mm. Oops, just make it vertically constrained, and this is all up to you. And now just close it, go to the feature, go to the hole wizard and select the contour bolt and select the contour bolt of size M6, position it and position it right here, something like this. क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीकर की बॉटम बेस आएगी तो इसलिए हमें यहाँ पे काउंटर बोल्ट यूज करना ही होगा. Now just close it and select the fixture, press and hold the control button and select the bottom plate and right click on it and isolate it. And now just take it to top view and select the bottom plate and go to the edit part, go to the sketch, select the center line and make the sketch on it and select the holes position. Oops, something like this. Now just open the base plate and go to the feature, go to the hole wizard and select the threaded hole and select the size of M6 already selected. Now just mark the hole position right here and somewhere here and hit OK and hide the sketch. Go back to the assembly and exit it. And now we have done all the threaded hole, clearance hole and contour bolt holes. Now what we have to just delete the temporarily made and make them constrained as it to be. और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. Now just save it. और अब हम इस टॉप प्रेसिंग प्लेट को न्यूमेटिक सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देंगे. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो न्यूमेटिक सिलेंडर है उसके अंदर जो पिस्टन रॉड है वो रोटेट कर सकती है
और जब पिस्टन रॉड रोटेट करेगी तो हमारा प्रेसिंग जिग भी रोटेट हो जाएगा और फिर मेश कवर को परफेक्टली प्रेस नहीं कर पाएगा। So what we can do? We can provide the guide to the pressing plate and then we will connect it with the pneumatic cylinder. और गाइडिंग के लिए हम यहाँ पे लीनियर बुश बेयरिंग को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर बुश बेयरिंग क्या होती है और उसे यूज कैसे करते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। और अगर न्यूमैटिक सिलेंडर को इस कंपोनेंट के बिना यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और अगला पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।